And we are back live. Bulls versus Titans. Bulls taking the field. Beg your pardon, Bulls taking the strike. Titans in the field. The winners from the first two matches. Good ball. Loud appeal. But the umpire is unmoved. Good ball there on the pads. Giving no room whatsoever. Good aggressive start from the Titans. Bulls coming off a fielding innings with the Nizams might be a little tired, but they would be pumped by the outcome of the game and would look to come into this game charging in. Oh, that's beautifully bowled. Clips the top of the stump. What a start for the Titans, and what a contrasting start for the Bulls. Jaishil is the next batsman in. Saw his exploits with the ball in the last game. Now we see him with the bat. What a start from Smith. Has kept it very tight, good line, good length, and then gets the man on the third ball. Titans all charged in the field. Will the bull run come to an end in this game? हिंदी आता नहीं अंदर से. And now we have in the com box with us Saidi from the operations team. Saidi, how's the day Yes. been so far for you? Very, very Come hot. closer, come closer. It's very hot, very, very hot. I don't know how these players are managing to play. But yeah, the previous two matches were an amazing matches. I mean, they were amazing matches. The first match, Titans versus Hurricanes, was a feast to watch. And the last match, Saidi, one question I have from the scheduling perspective that we have gone a little slow, and as I understand, the fourth match is not happening today. So, what do the organizers think about that? How are you planning to get the pace up and make sure we finish it tomorrow? yeah, what I've heard is we're actually looking for a nearby ground so we can immediately start in the next match. But I'm not really sure. But look who's on the field.
Sharad is back. I'm not sure if he'll get a chance to play today, but yeah, I think Sharad they needed. Well, after the first over, I think Titans are doing all right. But yeah, Sharad back in the team would be a great addition to an already Go Sharad! Woo! high performing team. And we have Mr. Cricketer Pratham Singh taking the ball. Fans were disappointed earlier today when he got out unluckily on the first ball. Haven't seen much of him since then. But now he's back, this time with the ball in his hand. What do you think? Will he be able to take a wicket? Saidi wants to know if I think Pratham is gonna take a wicket in this over. Maiden over. For Well, Pratham. all I can say is no one will be surprised if Pratham takes 6 wickets in 6 balls. He's a Ranji player. He's a professional cricketer, and he's playing against rank amateurs who just checked out from office last evening and took a flight and came here. Oh, that's nicely driven. I care about Pratham being a Ranji player, but Abhishek does not care. Takes him on first ball, drives him through the covers, 4 runs. That's confident batting from Abhishek, picking up just where he left in the last match. Pratham under pressure, first ball right away. Shakir having a quick word with him. Right. Hmm. 11%. Good enough. Yeah. Nicely bowled, but well negotiated by Abhishek. Pratham finding his line and length now. The first ball a little too full, allowing Abhishek to drive it away, but has been very disciplined since then. Pratham Singh, to the ones who may not know, is the captains of the Railways Ranji Trophy team. Plays with the likes of Shreyas Iyer and Karun Nair and Jaydev Unadkar in the Ranji Trophy season every year. Played in the Duleep Trophy last year, scored a beautiful 100. So that's handsomely hit over the mid-off fielder. Goes to the boundary. Bulls are high on energy from the last game. They do not care about players' reputations. They know they can win it. They know they can hit the big shots. And they are out to do that. Long off pushed back in response. Deep mid wicket brought in. Once again, slightly full from Pratham. Neatly driven down to long on for a single.
2 overs gone, 11 for 1. Smith is back into the attack. Smith bowled a beautiful delivery last over. Tight first over from Smith. Titans would expect more of that. Charges down the ground, runs down the wicket. Can Ronak get the throw? Oh, makes it back in time. Ball watching there at the non-striker's end. Jayasheel was running to the danger end. Abhishek should have taken the call. There was a run, but Jayasheel would be happy to have survived. Some of you are requesting for Hindi commentary. I did try doing that, but 25 years I've been watching cricket in English and finding it a little hard to switch. Oh, that's been slapped over the infield. Clears the fielder, clears the boundary. 4 runs. Intent is clear from Jayasheel. Not intimidated by the bowlers, not intimidated by Titans, not intimidated by Smith's line and length, not intimidated by Pratham's reputation. He believes in himself. That's a huge one. We did not get to see Jayasheel with the bat last game. And Bulls showing here that their team has a lot to offer. A star-studded lineup. Jayasheel now coming to the party. Smith corrects his line a little, but Jayasheel gets it over square leg. Runs to the boundary, 4 runs. Smith runs in again. Punched by Jayasheel to the leg side. Easy single. Very confident from Jayasheel. Very comfortable in his batting. And reserves running to the pitch. It's been a very bright and sunny day, very hot here out in the field. But there has been a consistent breeze. Pratham coming back into the attack. And Pranay is back in the commentary box with us. Pranay, new game, new hero with the bat for Bulls. What do you want to tell us about Jayasheel's batting?
So Jaishil has been in fantastic touch. He's a class of 23 alum, uh, part of Hyderabad batch. He has bowled in the nets and batted in the nets for the past couple of days with us. He's looked in fine touch, and that's just reflecting in the field today. I hope he goes on to have a longer innings. So yeah, let's see what this over brings. How are you liking the game up until now? I am quite impressed by Bulls showing up another ace in the field, coming up with the new batsman starting for them. They had a good performance from the top order last game. That's a good ball from Pratham. But they were bold enough to change the winning combination because they were confident in Jaishil, and we are getting to enjoy Jaishil's batting because of that. Yeah, and as you can see with this over, Pratham has decided to pull his length back a bit. In the previous over, his balls were landing in the slot; they were a little more full. In this over, he's taken them a little more towards the good length, and we can see that the batsmen are not attacking the ball as much anymore. It's landing around the good length area. So, also we see that the power play is done with, so we have better protection in the field out in the deep. It'll be interesting to see what their strategy is because they've had a good start for the first 3 overs. So, do they continue the attack or do they take it a little light for the next few overs and then resume the attack after that? It has, in fact, been a very balanced start to the innings. Titans drew first blood with the wicket from Smith's bowling, but now in the next 2 overs, Bulls have pulled it back a little, got the runs on the board. They do seem to be comfortable with scoring. Jayasheel is out today for as much as he can get. He is not stopping. He is hungry for wickets. He is hungry for runs. He is starved and he is feasting today. Yeah, in the break in the dugout, Jashi was like, I'll not have lunch because I want to eat the bowlers for lunch. And he's doing just that. He's playing a brilliant knock. He's of 27 of 15 balls with a couple of sixes, which is not easy. And we can see the shoulders drooping in the field for Titans a little bit. Their body language seems to be a little low because the batsmen just seem to be in a flurry right now. We'll have to see what the Titans have got in their kitty for taking out this attack because it seems like this partnership is just blooming. And Ronak there in the field concerned about his parcel delivery, sending the message to the dugout. Delivery वाले का call आएगा उठा लेना parcel. That's the beauty of this game. These are real people with real problems. They've got deliveries coming home, but they've put life on hold and come here in the field, in the sun. Ronak, as we all know, is the heir of Off Limits, the title sponsor, the title sponsor of ISL. And it's very gracious of him that he doesn't say कि पहली बैटिंग मेरी होगी. He's very professional in the field, putting in the hard yards. रौनक फील्ड पे है भाई क्रिकेट चल रहा है कितना स्कोर कर देगा हाँ Once again, we are हाँ waiting तो for the ये ball to मैच come ये back. मैच खत्म हो जाने देना फिर रौनक अरे तो अबे यार रौनक तो फील्ड पे है फील्डिंग कर रहा है और मैं कमेंट्री बॉक्स में हूँ। नहीं नहीं होने वाला भाई It's not going to.
कर देना भाई कर दे just order something. I'll take like 15 minutes or something. Sharad Rora walking Done. back into the field. Sharad, I think, was the most expensive player in the auction from the cohort. क्या क्या No, if I'm wrong, I'd appreciate if someone would correct me. But if my memory serves me right, Sharad was one of the highest bid players in the auction from the cohort. And now he's back on the field. Titans will be happy with that. And he replaces Ronak. Yeah, I think the parcel has finally arrived. It's difficult to manage communication while you're on the field. And you might not be able to see here on the camera, but at the edge of the ground, we can see a huddle of people searching for the previous ball. Um, Seems to be a problem. Maybe the next time we can give them feedback to have taller nets. Because if Jaishil comes to bat next year, it's definitely going to be a blocker. Not easy to spot that white ball in the dried grass around the ground. And I think we have run out of spare balls. Have we? We Ball found is it. back into the field. We found it. So, like I was telling you guys earlier, you can't simply use a new ball in the middle of the game. You have to use a, if even if you're replacing the ball, you have to use a ball that is similarly aged, similarly used, which is in an amateur game like this where we're not playing regularly, it's hard to have an inventory of such balls. So please bear with us for this delay. But let's not forget why we are having this delay. It's because Abhishek and Jaishil have decided to take on the bowlers, have decided to take on the professional cricketer in the team, taking the charge to the main man. And now Pratham is back with the ball. Can he pull out something special? Goes a little wide of the off stump. Fair ball, says the umpire. Jaishil not very happy. Gets a hand on it, but no runs. Crams for space. Good finish to the over by Pratham. Yeah, that's a good finish to the over. And how often have we seen Akash when the batsmen are going in full flow and there's a break of play due to drinks or due to the ball being lost? We see the momentum being lost. It'll be interesting to see how the next over goes. We're in for a good battle. Um, Titans are picking the next bowler. What do you think their strategy should be, Akash? How do you think Bulls should approach the coming few overs? Bulls, I think, have a good pair of set batsmen there and a good confident pair. And the message I think from the dugout would be clear: take the bad balls and respect the good balls. Keep wickets in hand for at least another 3-4 overs, and then you can take the charge to the bowlers once again. But having said that, I don't think these two are going to sit quiet. They're hungry for runs, they're attacking batsmen, and they're good. So the task is not going to be easy for Titans, would be desperately looking to get one of these two out. And as far as Pranay, you're talking about the momentum, the matches have had such a stop start nature to them. I don't think any team has gotten any momentum. End of over, fall of wicket, sixer, every time there's a 3-4 minute stop of play. Every 4-5 balls we have the reserve players coming into the field with water. The new bowler in is Arjun. Arjun was the main batsman for Titans in the first game, scored a wonderful 50, the only one in the tournament so far. Engineered
A great recovery for Titans in the first game after they lost Pratham in the first ball, and now he's back with the ball. Tucked away for a single. I think for Bulls, the first target should be how do we manage to reach a score of 120 to begin with, because Titans also have a strong batting lineup to reply to the totals that Bulls put up. So the first aim should be that, and then post that anything should be an added bonus on the total. Arjun also had a brilliant bowling spell in the last match, so we can see that he's continuing with the same form. He's been bowling decent line and length up until now. Seemed to be a little wide this one, and that's a quick single. Oh, that's a direct throw, and that's a run out. Abhishek not happy with the call. He's not happy with Jaishil at all. He lost his bat in the ground as well during the run, and that's a brilliant throw from the field. It's an amazing throw, and Bulls would be mighty disappointed. We're just talking about how the runs. Out of nowhere, honestly, Bulls were going at a great over rate. They had a great run rate. They did not need to take that chance. The ball was not even at the edge of the 30-yard circle, and the fielder doing a great job. Smith once again. This time in the field. Smith was the fielder with the throw. Once with the ball, once with the field. Titans knight in shining armor in this innings. Now Bumsy out to bat. Bumsy had a great partnership with Viraj in the last game. Viraj gone out early today. Arjun maintaining a good line outside off, making the batsman reach for it, not putting it in the slot. Good disciplined bowling. And that's been the hallmark in Titans bowling so far. And this is the difference from the last game. The Zans were giving a lot of extras, taking the pressure off the Bulls batsmen. But Titans, on the other hand, have been very disciplined. They did give away a few boundaries, a couple of sixes, but very disciplined in terms of extras. Oh, that's edged and taken. That's a double blow. Bumsy is out, doesn't stay in for long, crams him up, pushes him back. Uh, 12 overs is not a lot. Maybe in case of Vamsi, that could have been the case, but he did not look tired. His foot just seemed to have gotten stuck in the crease, did not see a lot of foot movement, and taking nothing away from the ball as well. It was a brilliant ball. He's been maintaining a great line and length with decent enough pace. It was a good catch by the keeper as well. Um, this pitch is not an easy pitch to bat on as well. The ball seems to be getting stuck in the pitch, which is why it's favoring the spinners and medium pacers as well. We saw that the fast bowlers were getting knocked out and around the pitch, but now with the medium pace on and the batsmen not set in completely, with Rao being gone and now Vamsi as well, who had a decent innings in the previous match. Now the Bulls seem to be in a spot of bother, and we were just talking about how the break could
make them lose momentum, and that's exactly what has happened from the last over to this over. Bulls have lost 2 wickets, have barely scored any runs, and now all of the balls just seem to be finding the fielders. That's a misfield in the 30-yard circle. They'll have an easy 2 from there. Yeah, the match is at a very interesting stage right now. Shivam, the new man in, takes a couple on the first ball, and with that, 37 for 3 after 5 overs. Titans edging up in front in this match with that last over, that wonderful direct hit from Smith, and then the caught behind on a good length, crammed him for room, kept bowling wide, then brought one at least half a foot in. Good controlled bowling from Arjun. And now what will Jayashree do? Will he keep the charge up, or will he try to keep things under the lid? He does look to keep the charge up, and not the best piece of fielding. Couldn't reach the ball in time. Couldn't prevent the boundary. The bowler would have fancied a catch. The bowler in is Gautam. Gautam bowled it full. Jayashree went for it. Didn't quite middle it as well. Umpire not interested. Going down the leg side, I believe. Once again, not middling it. Once again to the same fielder. And unfortunately for Titans, once again, same result. Dropped catch across the ropes. 4 runs for Bulls. How would this be making Jayashree feel, Pranay? Couple of miss hits, both going to the boundary, but not the best connection on them. Yeah, I think it's a mixed bag. He's not been able to time the ball these past couple of balls, but what would ease the pressure is the fact that those 2 balls have gone for fours. So his scoring rate, the team scoring rate, is not taken a hit because of that, and that would ease the pressure a little. Now we see that they've put their best fielder in the position where the 2 catches were dropped, and now Jai Shield quickly trying to take a single gets there's some miscommunication in the middle of the field, but they're back home safely. Yeah, I think Jaishil would not feel as much pressure as he would have felt if those 2 boundaries would have been stopped, let alone the catches being taken. So yeah, I think Gotham has been bowling at a fair pace and also at again a good line and length. He's been consistent. He's been creating chances for the Titans. That's what they want. Once again, we see that he's finding the fielder now, and suddenly the ground seems to be a lot more smaller after the fall of these wickets for these batsmen. They're not able to find the gaps. The fours that have come also have been by chance. So it's going to be an interesting game from now on. We have Gotham's last ball coming up to mark the end of the 6th over. Bulls in a bit of a spot of bother compared to the last match, but still they're not badly placed. Hit down the ground, clears the field handsomely. That's a big 6. Forget about all the talks of confidence. Jayashree is well and truly back, as if no catches were dropped, as if no miss hits happened, as if no runouts happened. He cleared the boundary handsomely, out of the fence. Away goes the ball, and once again, an interruption as we look for the ball.
So one insider story I'd like to tell you guys that Pranay and I went to a study trek in Odisha recently, and there I learned how good Pranay is at speaking Hindi. So we are gonna for at least the next couple of hours switch to Hindi. तो अब दर्शकों को हिंदी कमेंट्री का आनंद लेने की कोशिश करेंगे. प्रणय, क्या लग रहा है अर्जुन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ओवर में, और नए बैट्समैन शिवम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक शिवम के लिए स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल होनी चाहिए. आई थिंक फॉर नाउ ही शुड जस्ट लुक एट रोटेटिंग द स्ट्राइक और जयशील को स्ट्राइक पे लाने की कोशिश करनी चाहिए. वो काफ़ी फाइन टच में लग रहे हैं, तो अच्छी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है. अर्जुन की पेस इतनी कुछ खास नहीं आ रही है और इस पिच पर भी बॉल रुक रही है, और जयशील जिस तरह से सेट है अभी पिच पे, उन्हें काफ़ी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है अगले ओवर में. तो बुल्स इस ओवर पे कैपिटलाइज करना चाहेंगे. मुझे पता है कि हम हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं और मैं हर हिंदी सेंटेंस में एटलीस्ट 3 इंग्लिश वर्ड डाल रहा हूँ, बट इंग्लिश कर देते हैं इसे. ये बिल्कुल सही कहा प्रणय आपने, क्योंकि पिछले मैच में भी पब्लिक डिमांड पे मैंने कोशिश की थी हिंदी कमेंट्री करने की, पर नतीजा उसका यही निकल रहा था कि बॉल देख के, शॉट देख के, पहला रिस्पांस जो नेचुरली आता है, वो जो सुन सुन के बड़े हुए हैं, सीखे हैं, इंग्लिश में ही सुना है, देखा है क्रिकेट सारा, तो इंग्लिश में ही निकल के आता है रिस्पांस. अच्छा सिंगल लिया शिवम ने, कॉन्फिडेंटली, गुड कॉल. बोथ प्लेयर्स दोनों लग रहा है लंबी इनिंग्स खेलने की पूरी तैयारी में. 50 रन पूरे कर लिए हैं बुल्स ने 6 ओवर में. खराब स्टार्ट बिल्कुल नहीं है. जैसा कि प्रणय ने बताया था कि 120 का एक टारगेट लेके मन में चल रहे होंगे बैट्समैन अभी, और अच्छे पोजीशन में है दोनों अपनी इनिंग्स में उस टारगेट को लेने के लिए. और प्रणय, क्या बता सकते हैं आप हमें आने वाली बैटिंग के बारे में? क्या इस वक्त 1-2 विकेट गिरना एक बिल्कुल ही गति को रोक देगा बुल्स के लिए, या अभी बैटिंग और बाकी है, अभी और शॉट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेटली विकेट गिर जाए तो? जी, विकेट गिरने के बाद भी आई थिंक बुल्स की बैटिंग लाइनअप काफ़ी डीप तक जाती है. कोहॉर्ट के काफ़ी प्लेयर्स अभी बुल्स में बचे, जैसे अंशु है, शोभित है, ये भी बैटिंग कर सकते हैं. आदित्य मुंद्रा, ही कैन ऑल्सो बैट. तो इवेंचुअली इफ पुश कम्स टू शव और विकेट्स गिर जाते हैं, तो बुल्स के पास इनफ बैटिंग डेप्थ है. एंड दैट्स अ विकेट, एंड दैट्स अ बिग ब्लो फॉर बुल्स. बड़ा झटका लगा है ये. जयशील आउट हो गए हैं. बुल्स अब 51 रन्स पे थे, उनमें से 41 है, और उसके बाद भी बुल्स के पास काफी बैट्समैन बचते हैं, तो बैटिंग की कमी नहीं होगी, बट सेट बैट्समैन की कमी जरूर महसूस करेंगे बुल्स. अब देखना होगा अगले कुछ ओवर में क्या रन रेट रहती है, टाइटंस की क्या स्ट्रैटेजी रहती है. टाइटंस अब काफी कंफर्टेबल फील करते होंगे. 4 विकेट गिर चुके हैं 52 रन्स पे, और 6.5 ओवर हो चुके हैं. Titans will feel like they have the match under control with 2 new batsmen at the crease now. What do you think, Akash? तो भरत आए हैं बैटिंग करने. भरत को हमने पिछले मैच में बॉलिंग से अपने जलवे दिखाते हुए देखा था. बहुत ही शालीनता से रनअप लेते हैं अपना, बहुत स्मूथली आते हैं भाग के, और अच्छी लाइन इन लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की थी. अगर बस उनका वो पहला बीमर अगर आप छोड़ दें, तो उसके अलावा बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में. काफ़ी गेम किल किया था उन्होंने निज़ाम्स के लिए. विकेट निकाले थे लास्ट के, जो थोड़ी बहुत उम्मीद निज़ाम्स के लिए बची थी उस मैच में, उसको भरत ने ही ख़त्म किया था. अब एक अपने आप को दूसरे रोल में एक बिल्कुल ही अलग सिचुएशन में पा रहे हैं. थोड़ा सा बुल्स इस वक्त बैकफुट पे है और बैटिंग करने आए हैं,
एंड अर्जुन का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। अर्जुन ने 2 विकेट कॉट बिहाइंड 2 ओवर में लिए हैं। देखते हैं क्या करते हैं भरत। भरत बाल बाल बचे, इनसाइड एज स्टंप के ऊपर से सिंगल मिला। खुश होंगे स्ट्राइक से हटके। किस्मत उनका साथ देते हुए। शिवम काफी देर से है ग्राउंड पे, लेकिन उन्होंने अभी तक 2 ही बॉल खेली हैं। क्या लग रहा है, हो गए होंगे सेट अभी तक? जी अब समझदारी इसी चीज में होगी कि बुल्स अब थोड़ी बॉलें कंज्यूम करें, थोड़ी स्ट्राइक रोटेट करें, स्कोरिंग रेट कम ना होने दे, 1-2 रन निकालते रहे और थोड़ी बॉल की पेस पिच को समझने की कोशिश करें। एक आध ओवर वो ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों बैट्समैन दो तीन बॉलें ले सकते हैं सेटल डाउन होने के लिए। उसके बाद भी 5 ओवर बचेंगे, 4 या 5 ओवर बचेंगे जहां वो फिर स्ट्राइकिंग कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सेटल होने की ज़रूरत महसूस करते हुए, और बुल्स एग्जैक्टली वही करते हुए इस ओवर में विकेट गिरने के बाद एक एक रन लेकर अब थोड़ी अपनी पारी बनाते हुए स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहूँगा मैं ये, बिकॉज अभी हार्ड हिटिंग से मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 विकेट जा चुके हैं और बैटिंग लाइनअप ऑल्दो डीप है, वो टेस्ट नहीं करना चाहेंगे कि वो कितना डीप है। सही बात की प्रणय आपने। और पहले जो आपने मीडियम पेसर की बॉल के बारे में कहा था कि बॉल रुक के आ रही है थोड़ा पिच पे, उस बात का भी अर्जुन ने फायदा लिया है कि जो पावर प्ले के बाद वो आए हैं बॉलिंग करने, फील्ड मिली है उन्हें अच्छी बाउंड्री पे सेट, और बैट्समैन को पेस नहीं मिली है। जो शुरू में बैट्समैन ने पेस का फायदा उठाया था, वो पेस उन्हें नहीं मिली है। तो अर्जुन काफी डेंजरस साबित हुए मिडिल ओवर्स में, काफी सेटबैक्स दिए उन्होंने बुल्स को। और अब गौतम वापस अटैक में, और ये आउटसाइड ऑस्टम लगा था, बट टाइटंस में एक्साइटमेंट, अंपायर की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं। गौतम काफी तेज भाग कर आते हैं, काफी एक शार्प लाइन ऑफ स्टंप के पास से डालते हैं, लाइन एंड लेंथ अच्छी टाइट रखते हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग जिसे कहा जाता है। काफी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं पिछले गेम में भी, इस मैच में भी। दैट बढ़िया यॉर्कर, बम पे बॉल आया था या शायद ड्रॉप किया है गौतम ने, कहना यहाँ से मुश्किल, लेकिन यॉर्कर बहुत अच्छा था। प्रणय, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? जी, गौतम और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है साथ में, और गौतम बहुत ही बढ़िया बॉलर और बैट्समैन भी है, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है। इस ओवर में उनकी शुरुआत बहुत अच्छी रही है, और ये थोड़ी मिस मिस्ड बॉल थी, बट बैट्समैन अभी फ़ायदा नहीं उठा पाए। यही हम कह रहे थे कि बैट्समैन सेट नहीं फील करते हुए तो वो बॉल बल्ले के बिल्कुल मिडल से नहीं लगती है, और तो बॉल गंदी हो आप फील करोगे कि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। गौतम खुश होंगे कि ये बॉल चौके के लिए नहीं गई और एक ही रन के लिए गई। 3 बॉलें हो चुकी हैं, अब आई थिंक बुल्स इस ओवर को थोड़ा लाइट ले सकते हैं, बट उसके बाद उन्हें स्ट्राइकिंग शुरू करनी पड़ेगी, और हम देखते हैं कि भरत थोड़ा डाउन द विकेट आके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड से लग रहे हैं, शॉट फिर से शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो थी, बट मिडल नहीं हो पा रही है बॉल, और फील्डर हमेशा मिल जा रहे हैं बॉल को। वही हम जो 3-4 ओवर पहले डिस्कस कर रहे थे कि शोल्डर्स ड्रूप हो रहे हैं फील्ड में, सब शांत हो गए हैं जब जयशील बैटिंग कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि चैटर बहुत हो रही है, फील्डर्स हर जगह प्रेजेंट है, काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज, और ये छोटा सा कल्यूजन होते हुए। क्या लगता है आकाश, बुल्स के लिए क्या अच्छा टोटल होगा अब यहाँ से? बुल्स मेरे ख्याल से अभी भी, जैसा आपने बैटिंग लाइनअप की डेप्थ के बारे में बताया, मेरे ख्याल से बुल्स अभी भी 100 के ऊपर ही कुछ टारगेट कर रहे होंगे। और एक सिंगल्स को लेके पॉजिटिविटी अभी भी उनमें दिख रही है। इससे पिछले वाली जो बॉल थी, उस पे भी एक काफी अच्छा
टैक्टिकल सिंगल लिया शिवम और भरत ने, तो वो पॉजिटिविटी अभी भी दिख रही है। भरत डाउन द विकेट भी आए थे, तो आई थिंक उनको भी कॉन्फिडेंस है अपने बैटिंग लाइनअप की डेप्थ में। दोनों बैट्समैन जो अभी नीचे फील्ड में है, देखते हैं क्या अगले ओवर में कब ये गियर बदलने जाएंगे, या शायद गियर उन्होंने बदला हुआ है बट मिडिल नहीं कर पा रहे हैं। अगला एक ओवर शायद इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बुल्स के लिए, देखने के लिए कि ये जोड़ी इफेक्टिव हो पाती है कि नहीं। टाइटंस के कैप्टन और शरद के बीच में डिस्कशन। शरद आ रहे हैं बॉलिंग करने। 425 का बहुत पॉपुलर चेहरा, आईएसएल का इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे। थोड़ा पे बैक तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, एमवीपी वगैरह बन के कुछ थोड़ा जिगर को ठंडक मिले शायद। जी, और ठंडक की यहाँ बहुत ज़रूरत है। ग्राउंड काफ़ी गर्म, तापमान काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और शरद बहुत ही लंबी प्रैक्टिस करते हुए और चौका गया। प्रैक्टिस में चौका। आपको कैमरा पे नहीं दिख रहा होगा, बट हमें ग्राउंड पे दिख रहा है। बट शरद थोड़ी पेस के साथ बॉलिंग करवाते हैं, तो बैट्समैन के लिए शायद ये थोड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर पेस पर बॉल मिस टाइम भी हो जाए तो भी पीछे चौके जाने की संभावना होती है, और अच्छी टाइमिंग के साथ अच्छे शॉट्स की वैल्यू भी मिलेगी। तो देखते हैं शरद अब क्या करते हैं अपने रन अप से रन लेते हुए। और ये थोड़ी ऑफ द लाइन मिस कर गए हैं, अपनी लाइन वाइड हो गई है, बट लेंथ अच्छी थी। देखते हैं क्या एडजस्टमेंट करते हैं शरद अपनी लाइन और लेंथ में अब अगली बॉल में। कैसा लग रहा है आकाश आपको कमेंट्री करके? कमेंट्री एक लाइव मैच में मैं पहली बार कर रहा हूँ, और ये अच्छा जो एग्जैक्टली प्रणय जैसा आपने बताया था कि एक्स्ट्रा पेस मिलेगी शरद के आने से, और एक्स्ट्रा पेस का यहाँ पे फायदा उठाया उन्होंने। बहुत आराम से लेट खेल के एंगल डाउन कर दिया, थर्ड मैन को बीट किया, 4 रन लिए। क्या रिस्पॉन्स रहेगा शरद का? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज निकाल लिया बैट्समैन से। टेम्पटिंग लेंथ, बहुत वाइड ऑफ स्टंप। बैट्समैन को इनवाइट किया हाथ फैला के खेलने के लिए, जस्ट बीट किया शिवम के एज को। कमेंट्री प्रणय काफी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे अभी तक, और आपके आने से मैं कहूँगा काफी ज्यादा मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस बढ़िया शॉट, एक्टिविटी चौका। को। क्लियर किया बाउंड्री, 4 रन। काउंटर अटैकिंग बैटिंग यहाँ पे शिवम की, शरद की पेस का फायदा उठाते हुए वापस भेजा बॉल को कवर रीजन, कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन। शकीर शरद को टिप्स देते हुए। लेट खेला, फील्डर को बीट करते हैं कि नहीं, कर दिया है बीट। गौतम थे थर्ड मैन पे, नहीं पहुंच पाए बॉल तक। 4 रन फिर से। और ये गौतम ने दूसरी बार मिसफील्ड कर दिया है, बॉल बिल्कुल उनके बॉडी के बीच में से जाती हुई। थिंक थक भी गए होंगे, पिछली ओवर उन्होंने डाली थी धूप में। बॉलिंग करना फिर फील्डिंग करना आसान नहीं है, और इस पिच पे बाउंस भी काफी अनइवन है, जो आपको अभी कैमरा पे शायद नहीं दिख रही होगी, बट बॉल बिल्कुल सपाट आपके सामने आती हुई और अचानक से एक बम्प लेती है और आपके चेस्ट पे हिट कर जाती है जब आप फील्डिंग कर रहे हो। तो इतना आसान नहीं है। पेस का काफी अच्छा यूज किया है बैट्समैन ने, पिछले ओवर में काफी अच्छे रन निकाल लिए हैं।
3 चौके मिल गए हैं पिछले ओवर में, तो काफी अच्छी बात है। और ओवर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, शरद की अभी भी 2 बॉलें बची हुई हैं। तो जैसा हम कह रहे थे कि उन्होंने 1-1.5 ओवर थोड़ा सिंगल्स डबल्स करके निकाला, और अब वो थोड़ी एंटी अप कर रहे हैं, चौके निकल चौके निकल रहे हैं, अब थोड़ी स्कोरिंग की कोशिश करेंगे वो। और अगर मिस हिट हो भी जाए और आउट हो भी जाए तो बैट्समैन बचे हैं उनके पास 3-4 और, जो आके बस बल्ला घुमा सकते हैं और चौके छक्के निकाल सकते हैं जस्ट इन केस। हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, पेस माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस पिच। शरद की बॉल अच्छी पेस पे आती है और he has been very expensive in this over, तो मे बी we'll see what टाइटन स्ट्रैटेजी इज अगले ओवर से। और ये अगली बॉल, और ये अच्छी बॉल, स्लोअर बॉल लग रही थी ये, काफी धीमी आई बैट पर और अच्छे से डिफेंड कर दिया है। स्लोअर बॉल इज मे बी अ वाइजर स्ट्रैटेजी ऑन दिस पिच, क्योंकि बॉल एक्चुअली पिच पर रुक भी रही है। तो देखते हैं शरद अब अपनी आखिरी बॉल डालने के लिए रन अप लेते हुए। और ये अच्छी बॉल, और ये आउट। क्लोज लग रहा था, हाइट का ही इशू था, बैट्समैन भी उसी बात पर अंपायर से डिसअपॉइंटेड है, अनहैप्पी है, बट ही हैज टू एक्सेप्ट द डिसीजन एंड ही हैज टू लीव द फील्ड। शरद ने एक फाइन कमबैक कर दी है बाय द एंड ऑफ द ओवर, पेस थोड़ा कम कर दिया, विकेट टू विकेट बॉलिंग की, अटैक किया। था वैसा कुछ यहाँ पे शकीब ने रोल प्ले किया है, कुछ उन्होंने कहा शरद को, शरद ने उसके बाद अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट की, पेस एडजस्ट की, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। बढ़िया एक विकेट, डेंजर मैन शिवम, जिन्होंने 3 चौके निकाले थे इस ओवर में, उनको वापस भेज दिया पवेलियन में। कोई भी बुल्स का बैट्समैन ज्यादा लंबा नहीं टिक पा रहा है। जयशील ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट उनको भी निकाल दिया। जैसे ही बुल्स दिखाते हैं कि वो शायद गेम में वापस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से टाइटंस के प्लेयर्स कोई एक नया तुरुप का इक्का निकालते हैं और फिर से मैच को वापस खींच लेते हैं। अच्छा बैलेंस किया हुआ है मैच। 9 ओवर होने वाले हैं, 72 रन बन चुके हैं। अंशु आए हैं नेक्स्ट बैटिंग करने। अंशु की रेपुटेशन है कि वो टर्म 1 से लेके अभी तक हर क्लास में सो चुके हैं, हर कोर्स में उन्होंने नींद निकाली, और इसके हर लेक्चर के उनके फोटोज अवेलेबल हैं। ये पब्लिक बात है बहुत, ये एक पूरा एक एल्बम एग्जिस्ट करता है, अंशु मेहता क्लासरूम नैप फोटोज। इंडिया में अभी ओनली फैंस आया नहीं है, नहीं तो ये ओनली फैंस का एक काफी रिच कंटेंट बन सकता था। बट आज हम उनको एक अलग रोल में देखें। आज उनकी आंखें पूरी खुली हुई हैं, आज सुबह से मैं उनको देख रहा हूँ फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ। अब पहली बार बैटिंग पे उतरे हैं। प्रणय, क्या बताना चाहेंगे अंशु के बारे में? जी बिल्कुल, अंशु चाहेंगे कि वो अपनी नींद को शू कर दे, आज तो नहीं सोना चाहेंगे। ही शुड नॉट बी कॉट नैपिंग ऑन द पिच। वी सी दैट गौतम इज बैक फॉर अनदर ओवर। गौतम अगेन विल बोल एट पेस, और अब भरत ने स्ट्राइक ले रखी है और बढ़िया फील्डर ने हाथ लगाया, बट नॉट इनफ, और ये एक और चौका। इस पिच पर बॉल बिल्कुल ही पेस नहीं मेंटेन कर पाती, पिच होने के बाद बहुत ही स्लो होती हुई दिख रही है। टाइटंस की रणनीति थोड़ी बदलनी होगी टाइटंस को। आई थिंक उन्हें स्पिनर्स शायद ज्यादा बेनिफिट दे पाए, क्योंकि अब बैट्समैन को शॉट्स मारने के लिए पावर भी लगानी पड़ेगी। और भरत हम देख रहे हैं कि स्टेप डाउन करते हुए हर बॉल पर, और ये मिस कम्युनिकेशन, और कीपर और बैट्समैन के बीच में रनिंग कॉन्टेस्ट एंड अंशु इज कॉट नैपिंग। दी आयरनी, दी आयरनी, स्क्रिप्ट राइटर नहीं लिख सकते थे ऐसा।
अंशु बॉल वॉचिंग करते रह गए, दोनों प्लेयर्स बॉल। इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा, क्योंकि गौतम की रन रेट इज नॉट द बेस्ट, गौतम की इकॉनमी रेट हैज नॉट बीन द बेस्ट, गौतम हैज बीन अ टैड बिट एक्सपेंसिव, बट उन्होंने लिया है फैसला कि गौतम से कराएंगे तीसरा ओवर। पर अब नए बैट्समैन आते हुए फील्ड में। जी हम देख रहे हैं कि यूडी आए हैं अब बैटिंग करने। ये भी एलम है और अब भरत के साथ ये आखिरी ओवर तक साझेदारी निभाने की कोशिश करेंगे। गौतम आते हुए एक और बॉल डालते हुए और भरत फिर से स्टेप डाउन करते हुए, और उन्होंने बॉल को यॉक करवा दिया है। शायद वो अगर इस बॉल को बैकफुट पे खेलते तो इन द स्लॉट होती, लेकिन स्टेप डाउन करके खेला उन्होंने और एक सिंगल ले लिया है। देखना इंटरेस्टिंग होगा अब, फास्ट बॉलर वर्सेस फास्ट बॉलर होगा। गौतम वर्सेस यूडी, क्या करेंगे गौतम? यूडी लेग स्टंप का गार्ड लेते हुए, और ये अच्छा शॉट, अच्छा फील करेंगे। मिडिल ऑफ द बैट से लगती हुई बॉल, अच्छी फील्डिंग भी अर्जुन द्वारा। मिड विकेट पर खड़े हैं वो। गौतम ने अच्छी रिकवरी कर ली है इस ओवर में। भरत फील्ड को नापते हुए, देखते हुए कहां पर गैप्स है। गैप्स तो काफी है, बस बॉल स्ट्राइक हो जाए बैट से, वही वो चाहेंगे। और ये बिल्कुल ऑफ साइड पर लेग मूवमेंट कर दी। विकेट कीपर ने ट्राई किया, डायरेक्ट हिट एंड आउट। आउट। बुल्स वुड बी डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल अभिषेक राव जैसा डिसमिसल हुआ है, बैट हाथ से छूट गई। बुल्स की इनिंग्स बिल्कुल डोमिनो की तरह कोलैप्स होती हुई यहां पर। क्या कर रहे होंगे रौनक? क्या वो डोमिनोज के पिज्जा खा रहे होंगे? हैविंग बुल्स फॉर लंच। रौनक डेफिनेटली तैयारी कर रहे होंगे कि कैसे इस मैच के बाद टाइटंस के साथ पार्टी की जाए। मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अबाउट विनिंग दिस मैच। और अनलकी रहे थोड़ा यूडी, भागे थे रन के लिए, बैट फंस गया। अब थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं हेलमेट के साथ, हेलमेट देना है अगले प्लेयर को। शोभित आए हैं मेरा ख्याल है बैटिंग करने अब। जी शोभित को 25 से स्ट्राइक भी लेंगे शोभित। गौतम इस ओवर में काफी अच्छे रहे हैं, काफी अच्छे साबित हुए हैं, और हालांकि विकेट गिरे हैं रन आउट से, पर गौतम का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा इस वक्त। शोभित अंपायर से हेलमेट के लिए सहायता मांगते हुए, ग्लव्स पहने हाथ में। गौतम अपने स्पेल की आखिरी बॉल डालते हुए, आज के दिन का उनका ये बॉल के साथ लास्ट कंट्रीब्यूशन होगा, अनलेस फील्ड में कोई कमाल कर दें। शोभित गार्ड ले चुके हैं।
2 ओवर बचे हैं इस बॉल के बाद। यॉर्कर लेंथ पे खेली, टक किया लेग साइड पे, अच्छा एक सिंगल, क्लीनली टेकन। शोभित फिर से लौटेंगे स्ट्राइक पे। प्रणय, बुल्स क्या चल रहा होगा इस वक्त बुल्स कैंप में? कैसे इस स्कोर को अभी बुल्स देखेगा, बुल्स की टीम कैसे देखेगी, और फील्डिंग में कैसी स्ट्रेटजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, आई थिंक एक बल्लेबाज के अलावा बुल्स का कोई भी बैट्समैन सेट नहीं हो पाया है। इक्के दुक्के चौके मिले हैं, एज लग के, लेकिन 79 फॉर 7 आफ्टर 10 ओवर्स, बुल्स ने ये नहीं सोचा होगा। टाइटंस एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच, अगर हम उन्हें कहते कि 10 ओवर के बाद बुल्स 79 फॉर 7 होंगे, वो आग बंद कर कर ये पॉसिबिलिटी ले लेते। आई थिंक अभी बुल्स के लिए स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल होनी चाहिए। अगले 3 बैट्समैन अभी भी बचे हैं। आई थिंक दे जस्ट नीड टू गो स्ट्राइक। अगले 12 बॉलों में एटलीस्ट 25 रन का टारगेट रखना चाहिए। अगर वो हो जाए तो आसान होगा। और हम देखते हुए कि बॉल ये ऑफ कट डाली है अर्जुन ने, शोभित ट्राई करते हुए कट करने के लिए, बट बॉल पर बिल्कुल पेस नहीं, और ग्रिप करते हुए अंदर आते हुए चकमा खा गए बॉल आते ही। नवजोत सिंह सिद्धू कहते, बल्लेबाज को अगर मिलेगा एक मौका तभी तो पड़ेगा चौका। क्या ये होगा चौका? नहीं। गुड फील्डिंग इन द डीप, अभिषेक शाह द्वारा 2 रन मिले हैं। शोभित अब वापस स्ट्राइक पर। शोभित थोड़ी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, ने देखा है प्रैक्टिस मैचेस में शोभित को बैट करते हुए। साझेदारी भी निभा सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अब साझेदारी निभाने वाली इनिंग्स नहीं होगी। अब पारी होगी हार्ड हिटिंग वाली, चौको छक्को वाली। और ये फिर से ऑफ कटर, बॉल लो रहते हुए काफी, बिल्कुल ही बाउंस नहीं, स्किड होती हुई पिच से। अर्जुन काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए उन्हें समझ गया है कि इस पिच में पेस डालकर ज्यादा मतलब नहीं है। वो अपनी फिंगर्स रोल करते हुए बॉल के ऊपर से ऑफ कटर आती हुई। बैट्समैन रेडी हैं नेक्स्ट बॉल के लिए। मुझे लगता है शोभित अब अटैक करने की कोशिश करेंगे बॉल को। जी, बैट तो घुमाया है, बट ये होगा सिर्फ 1 रन। अब तक काफी अच्छा चल रहा है, 4 बॉल हो गई हैं, सिर्फ 3 रन दिए हैं टाइटंस ने पेनल्टीमेट ओवर में। काफी खुश होंगे इस परफॉर्मेंस के साथ। आफ्टर द इनिशियल स्टार्ट फॉर बुल्स, टाइटंस ने काफी रिकवरी कर ली है। और ये फिर से ऑफ कटर अंदर आती हुई, बिल्कुल बैट ही नहीं लग रहा। आई थिंक बुल्स के अगर बॉलर्स ये देख रहे होंगे तो उन्हें कुछ ट्रिक्स ले लेनी चाहिए इस बॉलिंग परफॉर्मेंस से टाइटंस की। बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है एज कम्पेयर टू लास्ट मैच, जहां पे टाइटंस अप टू द वायर लेके गए थे मैच को। इस मैच में कड़ी पकड़ बनाकर रखी है सिंस द मिडल ऑफ द इनिंग्स। और ये फुल फुल टॉस बॉल आती हुई और भरत उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा है ये, 4 रन केवल 11th ओवर में, सिर्फ 4 रन। क्या लगता है आकाश, क्या टारगेट होगा टाइटंस का इस ओवर के बाद? टाइटंस बिल्कुल कोशिश करेंगे कि फिर से एक और ऐसा ही रिपीट किया जाए ओवर। बुल्स चाहेंगे कि 100 का आंकड़ा पार किया जाए, क्योंकि बुल्स की बॉलिंग भी हमने पिछले मैच में देखी, काफी धारदार। बिल्कुल उनकी बॉलिंग को आप हल्के में नहीं ले सकते। पर बॉलिंग के नाम पे अर्जुन की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा। अर्जुन ने बहुत प्लान के साथ बॉलिंग की है। ही नोज हिज क्राफ्ट, उनको अपनी क्षमता पूरी तरह से समझते हैं, पूरी तरह से अपनी काबिलियत से वाकिफ हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट किया है। लगातार सही चैनल में बॉल डाली, शॉट ऑफ गुड लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप कंसिस्टेंटली, बैट्समैन को रूम नहीं दिया। शोभित को भी हमने देखा, काफी कोशिश कर रहे थे शोभित, जो 2-3 बॉल उन्होंने खेली अर्जुन से कि कट करें मारें, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। और उसी लाइन पे, उसी लेंथ पे 2 विकेट भी ले चुके हैं अर्जुन। तो काफी एक अच्छा 3 ओवर का स्पेल उनका रहा।
सिर्फ 11 रन दिए और 3 विकेट लिए, माफ कीजिए 2 विकेट लिए। काफी डैमेज किया है उन्होंने बुल्स की इस इनिंग्स को। शरद आए हैं लास्ट ओवर डालने। शरद ने स्टार्ट थोड़ा लेस देन आइडियल किया था, थोड़े चौके दिए थे, बट उसके बाद रिकवर अच्छा किया था ओवर खत्म होने तक। एक इजी सिंगल। प्रणय, अब भरत एक इम्पोर्टेंट बॉलर है बुल्स के लिए और भरत अभी फील्ड में है। क्या ये बुल्स के लिए एक डिसएडवांटेज होगा कि अभी तुरंत वो भरत को नहीं यूज कर पाएंगे, उनको कुछ ओवर का इंतजार करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि भरत तैयार होंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो पहला भी ओवर डाल सकते हैं? जी, बिफोर आई आंसर, स्विंग एंड अ मिस फ्रॉम शोभित, और ये मुझसे भी माइक थोड़ा स्विंग हो गया। जी, हमने डिस्कस किया कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग है, गर्म है, बट एक चीज़ अगर हम ध्यान में रखें कि बुल्स की जो ओपनिंग अटैक है बॉलिंग की, वो यूडी शुरू करते हैं, और उनके साथ साथ एक और यश चेंजअप यश आते हैं। पिछले मैच तक तो यश आ रहे थे, तो भारत के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा ना। उन्होंने इतनी इंटेंसिव इनिंग्स खेली है, उन्होंने अब सिर्फ 12 बॉलें खेली हैं, 10 रन बनाए हैं, उसमें एक चौका पड़ा है, तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं लगती हुई। पिछले मैच में भी उन्होंने आई थिंक 4th या 5th ओवर के बाद बॉलिंग शुरू की थी। आई थिंक he would be raging to go like a bull on the pitch after seeing this pitch behave like this. शरद बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ डालते हुए, और ये 2 रन निकालने की कोशिश, और ये पहुंच गए हैं। थोड़ी सी टकराहट हो गई है, कीपर भी डाउन लग रहे हैं, बैट्समैन भी डाउन लग रहे हैं। बैट्समैन जाके चेक करते हुए, गुड गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बैट लगा। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बुल्स की थोड़ी डिसअपॉइंटिंग वन रही है, शॉट। और ये अंपायर ने 1 शॉट कह दिया है। दैट रन अमाउंट्स टू नथिंग। किस बैट्समैन का 1 शॉट रहा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट अब आखिरी 2 बॉलें बची हुई, 86 फॉर 7 है बुल्स। 100 रन तो नहीं हो पाएंगे। ये बॉल बिल्कुल ऊपर जाती हुई, लैंड सेफ, और ये गंदा थ्रो, बट 2 रन मिलते हुए बुल्स को। 88 फॉर 7, लास्ट बॉल बची हुई। आई थिंक बुल्स काफी डिसअपॉइंटेड हो गए इस बैटिंग परफॉर्मेंस से आफ्टर लास्ट मैच, जब उन्होंने 130 प्लस स्कोर कर लिया था, और यहाँ पर 88 फॉर 7 ओनली। टाइटंस की बॉलिंग की भी दाद देनी होगी। शरद ने भी काफी अच्छा लास्ट ओवर करवाया है। ये आखिरी बॉल, और भरत स्टेप डाउन करके 1 रन लेते हुए, एक और रन आ सकता है, क्या वो ले पाएंगे? जी बिल्कुल, शोभित चेक करते हुए 1 शॉट सही है या नहीं, और बिल्कुल पीछे नहीं देखते हुए, और विकेट कीपर ने एक और विकेट चटका दी लास्ट बॉल में। फाइनल स्कोर 88 फॉर 7, 90 90 फॉर 7। फाइनल स्कोर, कॉन्फर्मेशन नहीं है अंपायर से। वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द अंपायर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप देख रहे होंगे, अंपायर भी अपने फोन पे हैं, हम भी 90 अपने for फोन पे हैं, हमें आ गई है कंफर्मेशन 90 फॉर 8, एंड दैट्स द टारगेट फॉर टाइटंस। 91 फ्रॉम 12 ओवर्स। द रन चेस कमिंग राइट नेक्स्ट अप। यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि सिर्फ 2 एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं टाइटंस ने। वैल्यू देखिए आप, पहले मैच में मैंने आपसे, जो पिछले मैच में मैंने आपसे कहा था कि एक्स्ट्रास बहुत हर्ट करते हैं टीम को। एक्स्ट्रास से बॉलर थकता है, उसकी रिदम खराब होती है, बैट्समैन का प्रेशर हटता है। और आज इस मैच में तुरंत ही हम इफेक्ट देखते हुए कि जब आप एक्स्ट्रास नहीं डालते हैं, जब आप डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं, तो बुल्स जिन्होंने पिछले मैच में 140 रन बनाए थे,
वो इस मैच में 90 ही रन बना पाए। पर फिर भी मुझे लगता है प्रणय कि ये किसी भी तरह से एक नॉन कम्पिटिटिव टोटल तो नहीं है। बुल्स की लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप जो हमने पिछले मैच में देखी, वो अपने आप को बैक करेंगे। वो कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में उतरेंगे कि वो इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। जी, और पिछले मैच में भी बुल्स अराउंड 50 रन से जीते थे। तो क्लोज मैच होगा काफ़ी, बट लग रहा है कि टाइटंस की बैटिंग निज़ाम से तो काफ़ी ज़्यादा भारी होगी। तो आई थिंक बुल्स का पलड़ा इस इनिंग्स में थोड़ा हल्का लगता हुआ टाइटंस वुड फील लाइक दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस टू विन एंड टेक दैट लीड ऑन द लीडर बोर्ड। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली इनिंग्स में। देखते हैं क्या बुल्स इस टोटल को डिफेंड कर पाते हैं।
Titans in the field with their response to Bulls' target of 91. Pratham Singh taking the strike. Steady start from both players. Uday bowling a good length ball into the stumps and Pratham confidently defending it. Cleared the infield. It was an inside edge, but such is the outfield that it has run away to the fore. Pratham will not mind that. Got hard hands on that inside edge. Guided the ball across the boundary. Not much wrong from Uday, just a little straighter than he would have liked. But races to the boundary. Confident block. Pranay, how do you feel about getting to watch Pratham Singh bat with us in our games? Feel like I've tuned into Star Sports today. Ranji. But one thing I've noticed, which is interesting with Uday's bowling in these few balls, is that he's rolling his fingers over the ball. He's not putting it at complete pace. You see that again. He rolled his fingers. The ball is coming off slower. The batsman is not getting any pace off the ball. Managed to catch his inside edge. Second ball, and he's off the strike. What do you think should be Bull's strategy? Should they stick to pace? They have a lot of pacers in their team. Or will they turn to spin soon enough? We haven't seen a lot of spins from the Titans in the first innings. Do you think Bulls will go towards that strategy? Bulls do have a great spinner in Jaishil who performed extremely well in the last match. So I'm pretty sure that they are not going to let that option go. And the fast bowlers, as we see from Udayan, seem to have gotten the message that Oh, brilliant! that's brilliantly caught in the slips. Not every day you get to see managers of the world diving and taking catches. Then maintained his line, bowled a good length. Now Arjun walks into bat. Arjun carried the innings in the first game along with Shakib. Now he's back trying to build the chase with Pratham now. That was an excellent catch at gully by Viraj. Viraj couldn't do much with the bat in the previous innings, but that catch has set the tone for Bulls' defense of this total. Pranay, how did you like that catch? It was brilliant. Just shows how much practice Viraj has under his belt. It's not that he's rusty. He was able to judge the flight of the ball, dived, and he managed to keep his hands on the ball, which is really difficult when your elbow hits the ground because of the momentum. And we see that UD is all fired up and raring to go. He asked the drinks guy, the 12th man, to also go back and not disturb his momentum after the wicket. Let's see what he's got under his belt. And a good ball! And that looks very close. The umpire thinks it's not out. To be honest, it looked plumb to me, Akash. It looked like it was going on to hit the stumps. I didn't think there was any height issue, but the umpire doesn't seem to think so. That marks the end of the first over. Titans are 5 for 1. It's a good start by Bulls. Good start by UD.
Bowled at a decent pace. He's rolled his fingers over the ball. Let's see how Titans approach this attack. We see Yash coming into the attack next. It'll be interesting to see how Pratham approaches this innings from here. He's just lost his opening partner. Will he go all out attack or will he try to settle in and get some runs under his belt? I believe looking at the total, Pratham would not be very concerned by the fall of the wicket. He'll play the ball on merit. Looking at the total on the board and how the scoring has happened in the previous games, I don't think he'll get desperate for boundaries. He wouldn't mind taking his time in the middle. He does have that space. The asking rate is not very steep. Nicely set up this match after Udayan's first over. And Pranay, that was a really close LBW call. I thought it would be given out, considering how Shivam was given out in the previous innings. But it was interesting to see that on this occasion the umpire felt that probably it hit outside, and I guess the umpire did not see it going in and getting the stumps, but it was definitely close. But then would have been deeply disappointed with that decision. Yash, the new bowler, rising up to the challenge of bowling to Pratham. Oi! That's out. That was nicked. Pratham has But has it carried? Pratham has nicked that one, but the umpires are gonna have a decision on whether it carried. Has it carried? It looked like it was close with the wicketkeeper. It's definitely been edged. Pratham is not moving. He's holding his ground. He thinks it did not carry. Bulls are sure it carried. The umpires are now trying to make up their mind. It's been given. Pratham is out. The big wicket. Bulls have gotten the big wicket. Bulls have made a statement. They are gonna grab this match right from the beginning. Yash picks up the wicket. What a special wicket to pick up. Now you see the reserve players running into the field, letting their players have the much needed hydration. We just saw with the previous ball, Yash had bowled around the fifth stump line and Pratham came to the line of the ball and decided to leave the ball previously. But this time he goes for it, tries to reach for the ball, and he ends up nicking it. And a brilliant catch at the back of the stumps by Abhishek that makes the world of difference. Bulls have been very good in the wicket keeping cordon, at the slips cordon. They've taken both their wickets as close catches, both of them behind the stumps. And Bulls would be very happy with this start. They've got the danger man out, the most talked about man, and now they can breathe a sigh of relief. But I think Titans would not be too bothered by the fall of these wickets. They still have the target within chasing area. They just try to build an innings, build a partnership. Both the batsmen in there. It's very important to not get carried away, not go to feel the ball, play it by the merit, and let the innings build up. We're hearing chants of one more, ye bhi out hoga from the field. The bowlers are definitely fired up. We're seeing that the Pacers are able to make a huge dent in the power play overs, and the Titans have not really been able to capitalize yet. There's not been a single boundary that has been hit from the middle of the bat yet. Let's see what Titans can do next to avert this danger crisis. But that ball kept really low. The pitch is showing its uneven bounce, and Yash has made a strong comeback from the last match. He's been bowling really well, really good line and length. It's also not easy to switch your line and length when you have a right-hander and a left-hander that you're bowling to consistently. Previously bowling to Pratham, who was left-handed, now it's right-handed. Again, a good ball, very slow off the pitch, not coming onto the bat easily. Batsmen taking their time.
We're in for an interesting game, Akash. Don't you think? Absolutely. I think the message in the Bulls dugout has been very clear that pace is not your friend on this wicket. And all the bowlers we are seeing are doing a great job of taking the pace off the ball. This has been cleared over the infield and is going to run away to the boundary. Much needed 4 runs for the Titans. Gotham gets off the mark. And with that, Yash's over comes to an end. 9 runs for 2 wickets. Titans chasing 91. So then coming back into the attack. Bulls have the opportunity to really push the Titans back. Another couple of wickets here in the next 2 overs. And Titans are gonna be really in a spot of bother. Then coming around the wicket. Nice line and length. Just short of good length outside the off stump. Arjun taking no chances, firmly behind the ball, blocks it confidently. That was a good ball, extra pace, extra bounce, rises up on Arjun, doesn't quite middle it, bounces off the bat but falls short of Udayan on his follow up. Udayan putting the pressure right on the batsmen, taking on their best batsman from the last game. That's been driven handsomely through the covers for 4. Almost angrily punched by Arjun, punishing Udayan's length. Udayan doesn't miss often, but Arjun makes him regret it. That's a wonderful cover drive for 4 runs. Arjun is gonna stand his fort, try and see the chase to the end, and Udayan might wanna bring back his line and length. Udayan clearly somewhat shaken by that boundary, misses his line. Doesn't happen much, was very disciplined in the last game. Straightens it too much, goes down the leg. That's on the pad and given. Udayan has done it. The change of length from Udayan has worked. Does the Ronaldo celebration. Much well deserved. Arjun looked good, confident cover drive. But now then brings one back in, gets him on the pad, plumb before wicket. ऑफ लिमिट्स आईएसएल के टाइटल स्पॉन्सर के बेटे रौनक फील्ड में आते हुए रौनक काफी हैंड्स ऑन एंगेजमेंट है उनका ऑफ लिमिट्स के साथ और किसी तरह मैनेज करते हैं अपना टाइम बिटवीन आईएसबी एंड ऑफ लिमिट्स तो काफी
मेहनत उनकी रहती है काफ़ी, तो नाव में उन्होंने पैर रखा हुआ है और उसके चक्कर में कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, जैसे रातों की नींद। तो वो नींद फिर वो क्लासरूम में वो भी पूरी करते हैं। और अंशु की तरह उनके भी काफ़ी एल्बम है, एक लेजेंडरी एल्बम क्लासरूम स्लीपिंग फोटोज़ की। बट आज नींद खोल के आए हैं 26 नंबर की जर्सी पहने हुए। स्ट्राइक लेंगे अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टूर्नामेंट, रौनक प्रेम। प्रणय, आप रौनक के क्वाडी हैं, क्या आप उनके प्रेपरेशन प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस के बारे में कुछ लाइट डाल सकते हैं? जी बिल्कुल। कल रात को हमने साथ में पास्ता खाया है। बिल्कुल अच्छे मेंटल स्टेट में थे, बिल्कुल रेडी फॉर द मैच है हम। और देखना होगा, अच्छा मैचअप होगा, रौनक वर्सेस यूडी। रौनक की प्रेपरेशन आईएसएल के पहले अच्छी रही है। मैंने इनको हमारी आईएसबी के क्रिकेट ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हुए देखा था। ही वॉज हिटिंग द बॉल रियली वेल, काफ़ी अच्छे लंबे लंबे छक्के मारे हैं। काफ़ी फील्डर्स को तंग किया था उस दिन उन्होंने जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। आज देखना होगा मैच डे स्ट्रैटेजी क्या होगी इनकी, क्या मेंटालिटी के साथ आए हैं। और ये बिल्कुल हाथ में, दैट्स अ गोल्डन डक। रौनक खुश नहीं होंगे उस शॉट के साथ। शॉट खेलते हुए वो चेक कर रहे थे शॉट को, फुल पावर नहीं लगा पाए, बिल्कुल अनहैप्पी होंगे। और रन पर 3 विकेट हो गए हैं, बिल्कुल ही टॉपसी टर्वी स्टार्ट। 4 विकेट। 14 रन पर 4 विकेट हो गई है। स्कोर बोर्ड अपडेट हो गया है। बिल्कुल ही ज्यादा थोड़ी साझेदारी निभाने की जरूरत है। शॉट्स ना खेले तो अच्छा होगा। 1-2 ओवर थोड़ा बॉल को टुक टुक करके खेलें, 1-2 रन ले। थोड़ा जल्दी में नहीं लगे रौनक आपको? मतलब काफी सॉफ्ट डिसमिसल के जैसे आज, जैसे माहौल उनके हिसाब से नहीं है कि नहीं आज नहीं खेलेंगे, आज कुछ और करते हैं। क्या कुछ बनाया है उन्होंने प्लान आज शाम के लिए जिसके लिए लेट हो रहे हैं? जी शायद पार्टी की प्लानिंग चल रही होगी दिमाग में विन के बाद की, और उसके लिए विन करना काफी जरूरी होगा। 4 विकेट डाउन हो गए हैं टाइटंस के, और ये थर्ड ओवर भी समाप्त नहीं हुआ है अब तक। टाइटंस इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर। और ये बिल्कुल अच्छी लाइन और लेंथ। अभिषेक ने डिफेंड कर दिया है। अभिषेक जो एक और अच्छे संभले हुए बल्लेबाज हैं कोहॉर्ट के, देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे अब पिच पर बल्लेबाज। थोड़ा संभल कर खेलने की जरूरत होगी। 1-2 ओवर शायद और बॉल निकाल ले, उसके बाद हार्ड हिटिंग करने की बिल्कुल केपेबल है दोनों बैट्समैन एट द स्ट्राइक। बुल्स ऑन द अदर हैंड have their ante up, steaming in. All the fielders are raring for the ball, waiting for it to come towards them. काफी इंटरेस्टिंग मैचअप चलता हुआ अभी। एक चीज जो हम और देख रहे हैं इन मैचेस में वो ये है कि एक विकेट गिरने के बाद 2-3-4 विकेट लगातार गिरती जा रही है। थोड़ा अगर संभल कर खेलें बल्लेबाज तो इस पिच का अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। बॉल धीमी आ रही है, टाइमिंग की अच्छी वैल्यू मिल रही है, आउटफील्ड काफी फास्ट है, बट उसे टेस्ट करने के लिए बॉल को आउटफील्ड में खेलना होगा। अभी तो सिर्फ फील्डर्स के हाथों में जा रही है बॉल। और ये अच्छी बॉल फिर से यश द्वारा, टॉप ऑफ 5th स्टंप की लाइन रखते हुए बैट्समैन को बिल्कुल रूम नहीं मिलता हुआ हाथ खोलने की कोशिश, और एच के बिल्कुल नजदीक से जाती हुई बॉल। ये डाउन द लेग साइड जाती हुई लग रही थी। अंपायर नॉट इंटरेस्टेड, लगता है अंपायर सिंगल नहीं है।
ये काफी आपने एक इंसाइटफुल बात की है यहाँ पे, एक ऑब्जर्वेशन काफी शार्प, काफी सटीक ऑब्जर्वेशन। अब ये हम मैच के बाद इसका गहराई तक जाएंगे इस गुत्थी की, और पता करेंगे, क्योंकि मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक कोई गलत फैक्ट्स लेके जाएं इस स्ट्रीम से। तो ये प्रणय ने जो बात की इसकी तह तक हम जाएंगे, पता करेंगे कि बात ठीक है कि नहीं। पर हाँ, बॉल डाउन द लेग साइड जा रही थी, बट बुल्स अभी चार्ज हैं, बुल्स चार्ज कर रहे हैं, तो अपील का मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये उठा के मार दिया है, फील्डर नहीं रोक पाए, 4 रन मिले यहाँ पे टाइटंस को। वेलकम बाउंड्री, थोड़ा सा प्रेशर हटेगा। अभी भी रन रेट बहुत ज्यादा नहीं है। जिस तरह पिछले मैच में निजाम्स के हाथ से बहुत जल्दी मैच निकल गया था, वैसी स्थिति अभी टाइटंस की नहीं है, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लेंगे इस बाउंड्री से। अच्छा, एक पॉजिटिव अटैकिंग शॉट मारा था, हालांकि फील्डर को बहुत क्लीनली नहीं बीट किया था, फील्डर के करीब से ही बॉल गई थी, लेकिन 4 रन डंके की चोट पे उठाए गौतम ने। ये कट किया सीधे पॉइंट के फील्डर के पास, कोई रन नहीं। क्विक सिंगल लॉन्ग ऑन पे भरत को चैलेंज किया फील्ड बैट्समैन ने। अब भरत ने रिटर्न तो अच्छा किया, लेकिन तब तक रन पूरा हो चुका था। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 19 रन बने हैं टाइटंस के, 4 विकेट लेकिन खो चुके हैं। सबसे उनके लिए दुख की बात ये होगी, 4 अच्छे बैट्समैन पवेलियन में वापस जा चुके हैं। 3 की तो हम अच्छी बैटिंग देख चुके हैं, और रौनक को दोस्ती के नाते अच्छा बैट्समैन अभी के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से विकेट फेंक के गए हैं अपना, थोड़ा रन डिसअपॉइंटेड एज अ क्वाडी आप रौनक के परफॉर्मेंस से। जी, डिसअपॉइंटेड तो मैं हूँ। मैं चाहता था कि अच्छी पारी खेले। हमारे दोस्त भी हैं कोहॉर्ट के प्लेयर्स, अच्छा मैचअप देखने मिले एक, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बॉल काफ़ी वाइड थी, शॉर्ट थी, इट वाज देयर टू बी हिट, बट क्या पता फर्स्ट बॉल थी, शायद वो सेट फील ना कर रहे हो। ने देखा कि उन्होंने शॉट बिल्कुल खेलते समय बीच में अपनी आर्म्स को रोका, मोमेंटम स्लो किया, कॉन्फिडेंट नहीं थे शायद, और सीधे फील्डर के हाथ में। फील्ड प्लेसमेंट्स भी इतनी ज़रूरी होती है आकाश। यहाँ पर हम देखते हुए अभिषेक सब चेक करते हुए, विकेट कीपर जो कैप्टन है बुल्स के, कि फील्डर सारे अपनी सही पोजीशन में है या नहीं। 5 मीटर का भी अंतर एक मैच और एक कैच का डिफरेंस हो सकता है। और ये जयशील आते हुए बॉलिंग करने, और ये अच्छा कट किया, और ये चौका। तीनों फील्डर्स जाते हुए, लेकिन बॉल रेस जीत गई। जयशील डिसहार्टन ना होंगे इस बॉल से। बिल्कुल बढ़िया बॉल थी, गुड लाइन, गुड लेंथ, आउटसाइड ऑफ, कमिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्टंप। कट लेने का चांस, एक विकेट दिलाने की भी अपॉर्चुनिटी होती है, विकेट कीपर बिल्कुल रेडी रहते हैं उसके लिए। और ये फिर से अच्छी बॉल। फील्डिंग कैसी देखने को लगी है आपको आकाश आज के मैचेस में? क्या कहना चाहेंगे आप फील्डिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ओवरऑल आईएसएल की क्रिकेट में? फील्डिंग में बेस्ट पार्ट रहा है फील्डर्स का कमिटमेंट। आसान नहीं है ग्राउंड पे फील्डिंग करना, इतनी धूप में, गर्मी में, खासकर जब ऊंचे कैच आते हैं, हाई कैचेस की हम बात करें, तो वो उनको देखना, बॉल को, सफेद बॉल को इस
हेजी नीले आसमान में, धुंधले नीले आसमान में सफेद बॉल का ट्रैक रखना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि टेस्ट मैच जो खेले जाते हैं, लाल बॉल जब रहती है नीले और आसमान, ये और ये कैच ड्रॉप फील्डर के हाथों के बीच में से बॉल गई, इंसल्ट टू इंजरी, बाउंड्री रोक दी है। रोक ली है, बचा ली है इंसल्ट। इंजरी तो हो गई। इंजरी तो लेकिन हुई है, ये यहाँ पे मैच खत्म करने का मौका था, बेरी करने का मौका था बुल्स के पास, लेकिन ये फील्डर के हाथों में से फिसल गया मौका। जयशील नाराज शोभित। आउटकम से, शोभित थे फील्डर अपोलोजाइज करते हुए जयशील से। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कैच था। रौनक कह रहे होंगे मेरा क्यों नहीं छोड़ा इसने, जब छोड़ ही सकता था तो, क्योंकि सिमिलर सा कैच था, शायद थोड़ी तेज बॉल थी, रौनक ने काफी सॉफ्ट मारा था, ये फिर भी थोड़ा पावर के साथ मारी गई थी, शायद इसलिए शोभित के हाथों में रही नहीं। जी हाँ, हार्ड बॉलों को हाथों में पकड़ना काफी मुश्किल होता है। सॉफ्ट बॉल फिर भी हाथ में लैंड कर जाती है। शोभित ने हैंग ऑन कर लिया था। बैट्समैन चकमा खाते हुए। जस्ट जब हम बात कर रहे थे फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स के बारे में और डिफिकल्ट होता है ग्राउंड पर फील्ड करना, हम देख रहे हैं कि बुल्स ने एक्स्ट्रा फील्डर बुला लिया है, डॉग आ गए हैं जो आपको कैमरा पे अभी नहीं दिख रहे होंगे, बट हम देख सकते हैं कि वो ग्राउंड पे हैं। फील्डिंग की स्टैंडर्ड्स ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी ठीक रहे। कैचिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है काफ़ी टीम्स की, और जैसे हमने सुना है कैचेस विन मैचेस, देखना होगा क्या ये कैच बुल्स के लिए भारी पड़ता है। शोभित काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट में अपनी कैप फेंक दी, और जैसे आप कह रहे थे कैप्टन कूल ऑफ बुल्स ने कहते हुए कि आप अपनी कैप वापस उठाइए, गेम को रिस्पेक्ट कीजिए, बॉलें तो आती जाती रहेगी, अपना आपा ना खोइए। क्या हम भरत की बॉलिंग अब देखने वाले हैं? जी हाँ, जी, बिल्कुल। भरत आते हुए बॉलिंग करने, फील्ड सेट करते हुए। बैट्समैन थोड़ी अनकंफर्टेबल लगते हुए अभी भी। देखते हैं क्या ये पार्टनरशिप आगे बढ़ा पाएंगे। भरत भरत ने भी पिछले मैच में काफी अच्छी बॉलिंग की थी। वनिंदु हसरंगा का सेलिब्रेशन करते हैं भरत विकेट लेने के बाद। ये आते हुए काफी बढ़िया बॉल, नो रूम, एक्स्ट्रा बाउंस। नो रूम टू प्ले विथ, और काफी बाउंस भी हुई। सही कह रहे हैं आप आकाश, काफी वेरिएबल बाउंस है इस पिच में, कोई कोई बॉलें लो रह जाती है, कोई कोई काफी बाउंस हो जाती है। क्रॉस सीम डिलीवरी ऐसी पिचेस पे बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, कि जैसे शार्दुल ठाकुर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब क्रॉस सीम करता हूं तो मुझे ही नहीं पता बॉल कहां जाने वाली है, तो बैट्समैन को क्या पता चलेगा। बिल्कुल वही रणनीति अपना सकते हैं बॉलर्स यहाँ पे। सीम पे अगर बॉल पड़ेगी पिच पे तो एक्स्ट्रा बाउंस हो जाएगा, सीम पे नहीं पड़ेगी तो लो रहकर स्किड कर जाएगी। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भरत द्वारा, अभिषेक को बिल्कुल रूम ना देते हुए हाथ खोलने के लिए, क्रैम करते हुए उन्हें। अभिषेक सर पर हाथ रखकर खड़े हैं, सोच रहे हैं क्या हो रहा है, बट वो रेडी हो गया अनलीश करने के लिए। पांचवा ओवर चलता हुआ, 30 रन बना लिए हैं टाइटंस ने। काफी हार्ड हैंड्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट टाइटंस के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी ये होगी कि वो स्ट्राइक रोटेट करते रहें, डॉट बॉल ज्यादा ना खेले, प्रेशर में ज्यादा ना आए। देख सकते हैं कि अभिषेक ऑलरेडी रेडी है बॉल फेस करने के लिए, बॉलर के मार्कअप पे पहुंचने के पहले से। ये सारी संकेत देता है बॉडी लैंग्वेज के कि बैट्समैन थोड़ी अनकंफर्टेबल है। अभी भी बिल्कुल मिडल से नहीं लगी और रन नहीं लिया है इन्होंने। ये तो रन लग रहा था आकाश, ले लेना चाहिए था, थोड़ा प्रेशर ईज ऑफ हो जाता। जी, ये दिख भी रहा है कि अभिषेक थोड़े उत्सुक हैं स्ट्राइक से हटने के लिए,
काफ़ी 4 बॉल से वहाँ फंसे हुए हैं। और लेकिन गौतम ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। गौतम जो कि इस वक्त पार्टनरशिप में सीनियर पार्टनर हैं, पहले से मौजूद हैं। और ये भरत में स्टेप करते हुए फिर से जाएंगे, फिर डालेंगे बॉल, रन अप अपना रिपीट करेंगे। को25 के कोहॉर्ट के 2 बैट्समैन पर जिम्मेदारी टाइटंस को इस मैच में बचा के रखने की, इस मैच में सरवाइव कराने की। हाफ वे पॉइंट के पास मैच पहुंचता हुआ अभिषेक हटते हुए स्ट्राइक से। आखिरी बॉल भरत की आती हुई इस ओवर की। अभी भी प्रणय, मेरा ख्याल है बुल्स के पास अभी अपना गार्ड डाउन करने का मौका नहीं है। अभी भी वो मैच उनके हाथ से निकल सकता है अगर अपना ये डिसिप्लिन और जो स्मार्टनेस के साथ बॉलिंग की है वो नहीं मेंटेन करें तो। जी बिल्कुल। रन्स ऑन द बोर्ड इतने ज़्यादा है नहीं, बॉलिंग भी काफ़ी टाइट कर रहे हैं, तो बुल्स बिल्कुल अपना गार्ड डाउन तो नहीं करना चाहते होंगे। ये ओवर समाप्त होते हुए और 30 रन पे 4 विकेट आफ्टर 6 ओवर्स। तो अब टाइटंस को 6 ओवर में लगभग 60 रन और चाहिए। अराउंड 10 की रन रेट होगी वो। तो बुल्स ने अच्छा कमबैक किया है विथ इनिशियल विकेट्स। अब उनके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो गौतम की विकेट निकाले। गौतम अब जो 17 रन पर है 14 बॉल खेल के, काफी संभल गए हैं पिच पर। इम्पोर्टेंट होगा देखना कि कैसे गौतम अप्रोच करते हैं इस चेस को, क्या स्ट्रैटेजी होती है। शायद एक ओवर और थोड़ा लाइट खेल सकते हैं टाइटंस, बट रन रेट का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा। हमने लास्ट लास्ट टू लास्ट मैच में भी यही देखा, लास्ट मैच में भी यही देखा कि ज्यादा रन जब लास्ट में बच जाते हैं तो काफी मुश्किल हो जाती है बैटर्स के लिए चेस करना। तो उन्हें थोड़ा पेस आउट करना पड़ेगा उनकी चेस को। बट एज यू आर सेइंग आकाश, आप सही कह रहे हैं, एक ओवर सब कुछ बदल सकता है। अगर बुल्स अपना गार्ड डाउन करे, एक ओवर जिसमें 15-20 रन अगर आ जाए तो रन रेट और इक्वेशन काफी बदल जाती है। देखते हैं अब बुल्स किसको अगला ओवर देते हैं। Shield seems to be coming back into the attack now. And the conditions for playing have become much more lenient on the batters, on the fielders, as the sun starts to go down. Some wind across the ground seems to have calming effect on the field of play. Jaishi setting the fine margins of his fields. Abhishek, once he gets set in, can be a very difficult customer to take care of. He's a very aggressive batsman. He can hit the ball hard, can hit the ball long as well. He's a powerful batsman. Bulls would be very wary and mindful of that. Wickets are going to be really crucial in the next couple of overs for the Bulls. Let's see what Jaishi has got in his kitty. Second is బాగుంది ఇప్పుడు ఇచ్చిన సెకండ్. Bulls clearly having the edge in the game so far. Nicely flighted by Jaishi.
That was straight hit straight back to the bowler. Couldn't hold on to it. She couldn't hold on to that one. Came at pace. Abhishek does look a little desperate to get a move on, and that's why he's decided to dispatch the ball over long on for a humongous six. And once again, we wait to get the ball back. This is going to be a very good opportunity for Titans to come back from here and make a statement that it's a team not just with great talent but also a team which is mentally a monster and does not give up. Gautam and Abhishek both making that point. Gautam getting a boundary in the last over. Abhishek with a six in this one. They are not ready to give up yet. They have the fight in them and they want to give it back to the Bulls. Taking on their best bowler from the last game, Jayashree. That beat Abhishek. He was nowhere near the ball and it barely missed the bails. It missed both the Abhisheks, Abhishek the batsman, Abhishek the keeper, and maybe the bail is also named Abhishek, so Abhishek the bails as well. Gautam has looked good so far. Gautam has been Gautam has been consistently playing late this innings. He has acknowledged the nature of the pitch, and since the moment he has come, he's been on the back foot. He's waited for the ball, cut late, even when he's hit in front of the wicket. Like now, it has been on the balls that have been really, really full. Pranay, what do you make of Gautam's batting so far? Yeah, I think as we were talking a couple of overs back, Gotham's innings is going to be really crucial for the Titans. He's anchored the innings well so far. He's led them through difficult times. And now he just needs to make sure that he gets his team over the line. It'll be very important that he sticks around at least for the next couple of overs. Both the batsmen now seem to have set in. Abhishek hitting that humongous six in the last over, and Gotham has also his eyes set on the pitch. He's playing the ball late, playing it well. The equation is definitely not difficult for the Titans. They're 38 for 4, 53 runs and 30 balls. Bharat is back into the attack now. It's an interesting area this where we're having the matches. It's just filled with cricket grounds all around. Multiple matches going on in the grounds around. Reminds me of Mumbai. Around Multiple Wankhede. matches would happen in the same. Yeah, in Mumbai you have multiple matches happening in the same ground within the same team as well. 4 batsmen from the same team batting on 2 different pitches. Everybody wants batting. You're playing gully cricket. This, my friends, is not gully cricket. This is serious business. And that's down the leg side. I hear pad. Yes, the umpire acknowledges it hit the pads. It's definitely not a good LBW appeal, but it's not a wide ball as well. The bowler must breathe a sigh of relief. He missed his line completely.
Gotham would be disappointed. Just a small nick and that would have run away to the fence. Not seen a lot of shots being played on the off or on the leg side. Seen a lot of shots played straight down the ground. It's a good quick run. Some good signal, good call. Good running between the wickets by the batsmen, showing good understanding. So perhaps the first time that they're playing together as well. So important to have that bonding as a team before the match starts. Believe in your non-striker. Abhishek has a very interesting batting stance. And he's nicked it. He's out. That's a brilliant catch by the keeper once again. Diving towards his right. Bharat takes up yet another important wicket. Abhishek seemed like he was... The Bulls must feel like they're back in it. Poised for an interesting ending to this game. I think the Bulls might just feel like they have a slight edge now. As Sharat comes into bat. Abhishek did look tentative while he was still there on the pitch, rushing onto the ball, getting beaten outside the off stump, and never really looked settled till the end. And then ended up eventually nicking one from Bharat to the keeper, losing his wicket. Now Sharad once again coming into bat. Sharad almost has a cult following in the cohort as a sports person. Lot of admirers, right from the O week when he did a good performance in the section wars, since then, and after the sports tournament we had among the cohort. Sharad has built a reputation for himself, built a fan following for himself. Of course, not enough to win the election, but enough to fetch him a good bid, a very competitive, very high bid in the auction. Trapped in front, first ball. Bharat has he killed the game? Can Titans come back from this? And now the Bulls would believe that they've got the match in their pocket. And it just seems like it's going right out of the hands of Titans. It would take a mammoth innings from Gotham to take them over the line now. Second golden duck. So the second golden duck, as Akash points out, of this match, this innings. Bharat would have his tails up. He's had a brilliant bowling performance in the past match, and he's also on a hat trick right now. Interesting to see if we'll see a hat trick from Bharat. Wanindu Hasaranga, if you're watching this match, you would be mighty proud of the celebration he's devoting to you and to all of the viewers of the match watching us live on YouTube right now. I hope you're enjoying the match. I hope you're loving the energy from the stadium. Know that we love you too.
Love that the fact that you're watching, that you're giving your time, watching the match. And here comes Bharat on the hat trick ball and well defended. I think he got the bat on the ball. A brilliant over by Bharat comes to an end. Titans are 39 for 6. 52 runs in 4 overs. It's not going to be an easy task. That's an uphill battle. They've dug their own ground by throwing away cheap wickets. Going to take a feel of the ball. Titans would be disappointed with their batting performance. It was there to be taken home after a brilliant bowling performance, but the Bulls have put on a show equal to the Titans and maybe just better. Vamsi to bowl. Vamsi into the attack now. He also bowls with a lot of pace. He has a good action. He's a good all-rounder. This Bulls team is not short of options. Also seen the man with the gloves, Abhishek Rao. He can roll his arms over and bowl quite good spin bowling. So if there ever be need, he can do that as well. He's done a brilliant job behind the stumps, managing his team, calming his bowlers down, calming his fielders down in the off moments of the game, and they're back in it. How important do you think a captain's contribution is to a game like this, Akash, when you've not really played a lot together? This might just be the first time all 11 of you are playing on the field. How important do you think his role has been? Oh, that's a close call. It was right above Bharat, and they'll take 2 runs. Yeah, that's a very fair point, and not just the captain, but the whole think tank of the team. Like we see with Bulls, how they have adapted very well to the nature of the pitch. And when you see a bowler missing his line, missing his length, the wicket keeper quickly, promptly, confidently correcting him, bringing him back on track. That's something invaluable that Bulls have with Abhishek. We saw that with Shakir in Titans as well, from behind the wicket, guiding Sharad uh, after the start, after a bad start to the over, and then Sharad coming back to pick up a wicket. Abhishek doing something similar, keeping his bowlers on the right track with good line and length. And such is the Bulls' attack. I am so impressed by the versatility of Bulls' attack that they just did not let Titans get away with it. They not one of the bowlers has been a bowler where the Titans would have felt, ki, okay, this fellow we can target. All of them have been very sharp, very accurate. And now Vamsi, the new bowler we are seeing in this match, didn't see him in the last game. And a rare wide this innings. I guess at this point they can afford a wide or two. Good disciplined performance from the Bulls. Did not have a big total on board. Titans really would have fancied their chance coming into the game. They're still not completely out of it, but would have fancied their chance. Bulls would have felt the pressure of not having a big total on the board. You could have said that last game they had a huge total on the board, so bowling was a much simpler task. This game, against a very formidable batting lineup, which included the likes of Ronak Prem, they had a difficult total to defend, and they've been completely up to the mark. Every bowler has showed up to the game. Every bowler has hit the right lengths, hit the right lines, and in fact hit the right pace. The fast bowlers of Bulls are capable of bowling much faster, but they've been smart enough
to hold their pace back. Just like this one, it was a slower delivery, came in full. Little bit of fumble there from Bharat in the field. 2 runs easily completed. The Bulls have left no ifs and no buts on the field. They don't want to go home thinking अगर मेरी चाची की भी मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता. They've left no stone unturned in trying to win this game. We're seeing good bowling here, attacking the pads, inviting the batsmen to go take a single on the leg side. Good protection in the deep on the leg side. Simple strategy by the Bulls. They won't mind the ones and twos. It's the boundaries that are going to hurt them, and they're not giving those away cheaply. 44 required of the last 3 overs. Reminds you of the situation from the first game, but in that game, Titans were the ones defending 40 runs in the last 3 overs. Now they're looking to chase 44 in the last 3 overs. Hurricanes had Shubham Patil smacking huge sixes for them in the last over, brought them close to the target, but couldn't take them through. Can Titans take a leaf from Shubham Patil's book and replicate something like that in these 3 overs and do one better and actually get the target? Very uphill task, very improbable, but to take the game away, it's a team full of champions, and they would still, even at this point, not want to give up at this chase. Bharat running into the attack. Cut away into the gap. Deep third man chasing the ball. Does a good job. Coming for two. Close run. Umpire says it's safe. Good running there by Gotham. Good confident running under pressure. Not easy after spending so much time in the field, playing his second match of the day, having fielded for 24 overs, having batted for 24 balls, still got the energy and the courage to take a double. Gotham has not given up on this chase. Titans have not given up on this chase. If he can get Bharat away for a couple of boundaries here, I think Pranay, the match is still on in that case. Yeah, absolutely. 42 runs in 17 balls. It's very gettable, and it's a wide. Bharat seems to be feeling a little bit of pressure. He's expecting Gotham to throw his hands at the ball, trying to keep the line very tight. He misses it by a whisker, and it's a wide. I think it's time Gotham needs to play a Gambhir innings from here. He's the only man that can get them over the line. The rest of the batsmen haven't really been able to settle in. He's also played a lot of balls. He's played around 4 overs, 25 balls, and it's a good shot. And that's going to run away to the fence for a 4. Fielder gives a good chase. He's not able to reach it. Gotham is upping the ante now. He knows that he has to attack the bowlers in the next couple of overs. He can't leave it to the final over. First match we saw there was 24 required of the final over. They came mighty close, but 24 is too uphill task. So now he started taking the attack. They need 38 runs of 16 balls. They need a big over here. Again, that's a good shot. Just get a single. Bulls have been good in the field. They've been good with the field placement. Converted those ones into zeros and twos into ones with tight fielding, good throws, good calls in the field. We see some changes being made with the new batsman in who's not settled yet. Left-hander. Interesting to see how Bharat decides to match up to him.
Every dot ball would feel like a gold mine to Bulls right now. Feel the victory inching ever so close in their grasp. Bharat needs to see out this over, and the Bulls would feel like they have a foot in the door of the victory. And that's an easy catch. Batsman had no choice but to throw his bat at the ball in the hope of getting a boundary, but he mistimes the shot. Goes straight in the hands of UD. Go. 7 wickets down now. What do you do if you're Gotham right now, Akash? What would be your strategy? Tell us your MBA consultant prep. From an MBA consultant point of view, I think Gotham should look for an exit, see if there's an opening with Bulls, and quietly switch jerseys. His team has let him down. There is no other way to put it. There have been so many soft dismissals, first ball dismissals. Good 1 run stolen. Bharat apologizing to his team, but I guess he's earned that much by the excellent bowling that he's done today. Gotham clearly seems to be fighting the lonely fight. He would like to try to take the game deep. He did see what Shubham did in the morning, getting the game so close in the end and falling short by one big hit. Gotham would back himself, would fancy to do the same. You'd like, I would say, anywhere up to 20 runs in the last over, and Gotham would fancy a win here. So, but then that still leaves Titans to get another 15-20 runs in this second last over. And Bulls are bringing in their bowling trump card, Udayan, who broke the Titans' back in his early spell, in his opening spell, picking up 3 wickets in just 2 overs. And now he's back into the bowling to kill this game for good. If he takes out Gotham right now, it's well and truly over for the Titans. But it's going to be Bhuvnesh on strike facing Udayan. How would the Bulls how would the Bulls be feeling right now, Pranav? I think if I were to put it in a framework, the Bulls must be going for just keeping the runs in this over to a minimum. Go for like 10-15 runs and they'll still feel comfortable, although they would not want to do that. That's a misfield in the field by Bharat. Gives away 2 runs. The Bulls might not be that bothered by singles and twos. Titans desperately in need of boundaries right now, and their set batsmen can't find a way to get on strike. What do you think of Gotham's scoring rate? Akash, he's made 31 runs of 27 balls. It's almost run a ball. But it's not been very easy. So, very weak appeal. Bulls are now shouting at everything. They see everything in red color, charging towards everything in their sight. Gotham is now back on crease. He needs to go for it. He needs to attack these next 4 balls. Stay on crease as much as possible. Face as many deliveries as possible of the next 10 balls. And he's gone. The middle stump is gone. Udayan gives him no chance. No chance at all. 8 wickets down for Titans.
like we're living in Gotham City. They would need a Batman to come rescue them. Can Gotham Borkar be Batman in disguise? गौतम बोरकर आए बैटिंग करने, और बोर करने का बिल्कुल समय नहीं है उनके पास। बहुत ज्यादा रन चाहिए, बहुत कम बॉलें बची हैं और कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा इस वक्त सेट होने का, इंतजार करने का या बॉलें खेल के निकालने का। इनके पहले गौतम भी आउट हुए, वो इसी कोशिश में कि कट करके निकाल देते थर्ड मैन के पास से चौका, लेकिन वो हुआ नहीं। स्टंप खो बैठे अपना। यहाँ घुमाया गौतम ने, कनेक्ट नहीं हुआ बिल्कुल। अंधाधुंध बैटिंग जिसे हम कहते हैं, गौतम बुद्ध दिखाते हुए। अच्छा बुल्स का फिर से एक बार और थोड़ा बैटिंग में उनको चैलेंज किया टाइटंस ने। अच्छी बॉलिंग की, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की, अच्छे टोटल पे रोका, लेकिन कॉन्फिडेंस बुल्स का इतना लाजवाब कि बैक किया अपने बॉलर्स को। ये स्लोअर बॉल डाली उदयन ने, चकमा देने की कोशिश की गौतम को। गौतम ने बैट लगाया बॉल से, लेकिन गैप नहीं निकाल पाए, एक ही रन मिला। वाइड जा रही थी बॉल, छोड़ते तो भी एक ही रन मिलता। आखिरी ओवर में 31 रन चाहिए टाइटंस को। गौतम और भुवनेश डिस्कस करते हुए, शायद भुवनेश उनको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ सिक्स मारो, याद दिला रहे हैं उनको युवराज ने कहाँ कहाँ सिक्स मारे थे इंग्लैंड को। टाइटंस की बैटिंग काफी निराश होगी खुद से। गौतम, जो आपने पूछा था सवाल प्रणय, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। हालांकि आपका सवाल मुझ तक आने से पहले गौतम आउट हो गए थे, पर गौतम ने बहुत अच्छे से पेश की थी अपनी इनिंग्स। एक, अगर वो कंसिस्टेंटली 100 का स्ट्राइक रेट नहीं मेंटेन करते तो उनके ऊपर ब्लेम आता, उनके ऊपर नाम आता कि आपने दूसरे बैट्समैन पे प्रेशर डाला। 8 की रिक्वायर्ड रन रेट थी, 9 की रिक्वायर्ड रन रेट थी, आप स्लो खेलते रहे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गौतम ने। काफी एक रन रेट मेंटेन करके रखी, स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखी, चौके निकालते रहे। तो ब्लेमलेस इनिंग एक खेल के गए हैं वो, लास्ट तक रहे, कोशिश पूरी की। और ये एक बड़ी अपील पिछले पैर पे लगा था, बट अंपायर का इंटरेस्ट नहीं। आखिरी ओवर चल रहा है इस वक्त। दो बॉलें हुई हैं, वंशी ओवर डाल रहे हैं, वंशी खत्म करेंगे इस इनिंग्स को बुल्स के लिए। और भुवनेश आए हैं, भुवनेश ने पिछली इनिंग्स में तो बॉलिंग ज्यादा नहीं की, बट पहले मैच में सुबह बॉलिंग की थी और अच्छी ही बॉलिंग की थी। पर वही है कि सारी टीम्स इतना रिच है टैलेंट से, और आपको एक ही दिन में बार बार मैचेस खेलना है, तो आपको अपने प्लेयर्स का वर्कलोड भी बैलेंस करना होता है। तो जैसे हमने देखा, प्रथम ने नहीं पहले मैच में बॉलिंग की थी, दूसरे मैच में भुवनेश ने नहीं बॉलिंग की थी, कल अब हम इन दोनों को ही शायद देखेंगे बॉलिंग करते हुए फिर से। थोड़ा सा ऑफ रहा सेकंड मैच टाइटंस के लिए। शुरू में हमें लगा था कि शायद बुल्स के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बुल्स बैक टू बैक खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स शायद रिकवर नहीं कर पाए होंगे। टाइटंस ने सुबह अपना मैच खेला था, उनको अच्छा खासा 2-2.5 घंटे का ब्रेक मिला था बिटवीन गेम्स, और ये फ्लाइट डिलीवरी वंशी की, चकमा खाए भुवनेश, बिल्कुल नहीं रन बना पाए। प्रणय, कैसा रहा आज का दिन? तीनों मैचेस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बुल्स ने 2 जीते हैं, टाइटंस ने 1 जीता है। कैसा आपके दिन के खेल का रिव्यू रहेगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। फर्स्ट मैच और ये रविचंद्रन अश्विन पुल करते हुए वामजी, और अंपायर ने बैट्समैन को आउट दे दिया है। बट ओवरऑल आज के दिन की अगर मैचेस की बात करें आकाश,
बोरकर क्यों गए क्रीज छोड़कर? राइमिंग स्कीम आपकी कमेंट्री की अच्छी है। बोरकर क्यों गए क्रीज छोड़कर, बट वो क्रीज से बाहर निकल चुके थे बॉल डालने के पहले, और बॉलर ने स्टंप पे बॉल मार दी। बेल्स डाउन हो गई और वो रन आउट दिए गए हैं बाय द अंपायर। इस टाइप के रन आउट को मैनकेडिंग कहते हैं, after named after this Indian bowler who first invented this kind of run out, running a non-striker out even before the ball is bowled. Overall, I think the matches have been interesting. We've seen really good matchups. It was a chance. It's a difficult chance in the follow-up for the bowler. Titans would be disappointed with this performance, especially the batting performance. The bowling was still up to the mark. The runs were within reach, but they just couldn't manage to sort their batting out. That's an easy win for the Bulls, it seems, by the end of the match. Now, Bulls, having won 2 out of their 2 matches, would be going confidently into the matches tomorrow. Titans would feel like they have work left to do. We have one more match to go that will help us ease out the equation a little more. But for now, Bulls showing a very dominant performance, taking both Titans and Nizams through their horns, throwing them away. We'll catch you guys in the next match. Yes, guys, thank you so much for tuning in. It had been an exciting day of play. Thank you for joining us. And tomorrow, hopefully, more of you will join us in the commentary box. A heartfelt thanks to Pranay for leaving the team camp and coming here and joining me for commentary. And I have been getting your messages, your compliments. I'm very thankful to all of you for appreciating our efforts. Thank you so much. Good night, friends. See you tomorrow.